What's up, guys? This is Rabiata here, and you are listening to the Brown Girl Rants. This is the last episode of 2023. And how are we feeling? How are we feeling for 2024? Are we happy? Are we excited? Are we not feeling anything? Are we feeling bad about it? I hope no one's feeling bad about it. Or if you are, I hope this episode's change your mind because it's gonna make you positive about the upcoming year and uplift you and boost you and make you feel a little bit excited and positive about the things that are coming for you and your life. Lekin we'll go on to that later. First of all, let me share life updates with you guys. So last episode I told you all that I have a very hectic week ahead because it's my friend's wedding and I was also very stressed about it. मैंने कहा पता नहीं क्या होगा और मुझे बहुत सर्दी लगेगी. It was so much fun. Mashallah, so happy for them. First of all, they looked adorable together. Is that the word? They looked gorgeous together, and they were very happy, and that made me happy. And it was so much fun. It was so much fun. Like I never had this much fun at a wedding, and you can tell because I did share a lot on my Instagram. So I don't know if you haven't followed me, which is why you haven't at this point. Lekin I shared a lot on my Instagram. I was really happy and I shared कि you really have fun on your friend's wedding. अच्छा इसमें ये scene भी था कि my friend got married to a person that I know that is also a friend. मतलब मतलब ग्रुप है पूरा, ठीक है ना. तो इस वजह से I know the guy too and he's also a friend and और मतलब हमारा पूरा ग्रुप है तो इट्स जस्ट मोर फन जब आप दोनों साइड्स को जानते हो. लेकिन आई ऑल्सो सेड अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग जिसपे मेरी मम्मा ने मुझे बाद में कहा भी कि तुमने ये क्यों बोला. और मैंने ये बोला कि आपको इसलिए भी ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स वेडिंग पे मज़ा आता है क्योंकि आपके रिश्तेदार नहीं होते उस पर. एंड शी सेड के a lot of relatives of yours follow you, so matlab, how would they feel about it? Like, and I think it's a fact and they should accept it, and I think they feel the same about maybe me and I don't mind that. लेकिन मेरा मतलब ये नहीं था कि कोई बहुत टॉक्सिसिटी होती है और बहुत इस सब होता है. मुझे बस लगता है कि sometimes जब when there's a hall full of people that know you, they know you but you're not that close to them, you're not that, obviously कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन होता है, कुछ लोगों के साथ आपका नहीं होता. तो there is thing back in your head कि maybe they're like judging me for everything you do. या sometimes ऐसा होता है कि they know you don't have that connection with them but you have to go and greet everyone अस्सलाम वालेकुम, which is fine I think. लेकिन कभी कभी आपका नहीं दिल चाहता. मेरे जितने भी कज़नों की शादी हुई है हमें बहुत मज़ा आया क्योंकि आई हैव अ ग्रेट बॉन्ड विद माई कज़न एंड वी एंजॉय सो मच. वी आर वेरी फन पीपल. लेकिन द हाउस इज़ वेरी केओटिक और कभी कभी कोई नाराज़ होकर बैठा होता है. और मैं मतलब कि बाकियों के लिए नहीं कह रही, मुझे लगता है मैं खुद या फिर मतलब मेरी फैमिली भी, मुझे लगता है कि सारे इसमें शरीक हैं. और लेकिन कभी किसी को कोई बात बुरी लग जाती है और मेरे जैसा जो इंसान है ना जो किसी को नाराज़ नहीं देख सकता वो फिर पैनिक करना शुरू कर देता है कि ओ क्या ये क्या हो रहा है. लेकिन बहुत केओटिक होता है. कोई रह जाता है, किसी को कन्वेंस मतलब कि पहले चला जाता है, कोई बाद में चला जाता है, किसी को कोई याद नहीं रहता, कोई निगलेक्ट हो रहा होता है, किसी को ज़्यादा अटेंशन मिल रही होती है. ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कभी कभी कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी जो है वो केओटिक हो जाती हैं. और ऑब्वियसली हमें अपने तौर पर इंडिविजुअली ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जब भी आप ज़्यादा लोगों के साथ रह रहे हो. लेकिन एट द सेम टाइम इट ऑल्सो इज़ फन. लेकिन फ्रेंड्स वेडिंग इज़ समथिंग एल्स क्योंकि इट्स नॉट योर वेडिंग और आप पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. योर मतलब कि आप लेकिन आपके बहुत ही करीब इंसान की शादी है. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट बट इट्स जस्ट फन. एंड इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आपकी फैमिली की कोई वेडिंग. और मैं ये नहीं कह रही नॉट टू टेक अवे फ्रॉम योर फैमिलीज वेडिंग, स्पेशली कजन्स वेडिंग, दे आर फन एज वेल. लेकिन इट कम्स विद अ लॉट ऑफ लाइक थिंग्स दैट यू हैव टू हैंडल on the cost of having that fun with your cousins and other people. तो इस वजह से मुझे लगता है कि sometimes you just feel more free on your friend's wedding क्योंकि you know कि you don't know anyone but at the same time you have a closer relationship with the bride and the groom, so you are relevant but you aren't relevant to the people, to the guest. ठीक है. So that's the thing. लेकिन I had so much fun.
अब मैं मायूं पे बहुत बुरी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने आई रिडीम्ड माई सेल्फ फॉर मेहंदी, बारात एंड वलीमा. तो या दैट्स इट, दैट्स द अपडेट फॉर वीक. उसके बाद अगले दिन भी मैं शादी पे गई, और वो शादी इट वॉज सो मेस्ड अप. सबसे पहले तो वो लाहौरी शादी नहीं थी, इट वॉज टू फैमिलीज फ्रॉम टू डिफरेंट सिटीज़ जिन्होंने अपनी लाहौर में शादी की थी, फार्म हाउस में. और हम वहाँ पे इतना लेट पहुँचे, 9 बजे हम पहुँचे, और लड़के वाले नहीं आए हुए थे. हालांकि हम लड़के वाले की साइड से थे, लेकिन लड़के वाले फैसलाबाद से आ रहे थे. तो आई डोंट नो, 6 बजे का टाइम था, वो लोग 10 बजे लेके आए हैं. 12 बजे निकाह हुआ है, 11 11:30. उसके बाद फिर खाना लगे, हम लोग 3 बजे घर वापस आए. तो दैट वेडिंग वॉज उस शादी ने मुझे थका दिया था. उसके अलावा आई वॉज जस्ट सो हैप्पी टू गेट 3 days बीच में ऑफ इन बिटवीन दीज वेडिंग्स. आई एम वॉचिंग माई फेवरेट शो. मैं लिटरली हर रोज़ 4 एपिसोड्स देख रही हूँ, और आई लव दैट, क्योंकि मैं बिंज वॉच करने वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन दैट शो इज़ एंडिंग. तो जब कोई शो एंड हो रहा था ना, तो मैं बिंज वॉच करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि तब आई एम हुक्ड फॉर दैट शो. तो इट्स गोना एंड एंड आई एम गोना लूज माई माइंड. लिटरली आई लव दैट शो सो मच. लेकिन I am also excited to start a new show. Also, I completed my Goodreads reading challenge. If you don't know, Goodreads is an app जिसपे आप बुक पढ़ते हो और उसका रिव्यू देते हो. So it's like mainly बुक की ऐप जिसमें आप पढ़ते हो और बुक का रिव्यू देते हो, जैसे मूवीज़ के लिए लेटर बॉक्स है. तो उसमें ये होता है कि हर साल के शुरू में आप अपने लिए एक रीडिंग चैलेंज सेलेक्ट करते हो कि इस साल मैंने 20 बुक पढ़नी है, 30 पढ़नी है, 40 पढ़नी है. मेरा जो था वो था कि मैंने 20 बुक पढ़नी है, और मैंने पढ़ ली. थोड़ी सी मैंने चीटिंग की है, क्योंकि एंड पे आके ना मैंने 40 पेजेस की बुक पढ़ी है, लेकिन दैट बुक वॉज रियली गुड. मैंने उसका इंस्टाग्राम स्टोरी पे अभी रिव्यू दिया है. तो मे बी यू आर वॉचिंग, when you're not watching it, maybe when you're listening it, so the review is still up, so you can like totally go and check the Instagram story, because that book is really good. Book name is Birthday Girl by Haruki Murakami. It's a really good book. My views on Murakami are not established yet. The book is really good. मैंने उसके अलावा उसका कोई काम पढ़ा नहीं है. Heard he's a misogynist, तो but also he's a good writer. तो let's see. I want to read one more. His writing is misogynist. I don't know him as a person is. Like obviously, your personality reflects in your work. तो let's see. मुझे लगता है कि with Murakami and Kafka, इन दोनों के बारे में मिक्स्ड ओपिनियन है लोगों के. तो I haven't read Kafka yet. तो मैं दोनों को पढ़ना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि मेरा क्या ओपिनियन है. तो really excited for that. To read more books in 2024, or we'll talk about, मतलब कि speaking of 2024, today's episode is we are gonna talk about how to start our 2024, how to settle our goals, how to make our goals, and how to like process them. नहीं, मुझे वर्ड क्यों नहीं आ रहा, मेरी vocabulary literally ख़त्म हो गई है. How to go with them, and how to like complete those goals, and how to make sure you're following those goals. वरना, और मेरी पहली पॉडकास्ट इसी के बारे में थी, कि क्योंकि वो मैंने 2023 के फर्स्ट वीक में बनाई थी कि why our न्यू ईयर रेजोल्यूशंस डोंट वर्क. और इस वजह से आज की पॉडकास्ट में मैं ये कोशिश करूँगी बताने की how to make our 2024 resolutions work, और मतलब how to have an amazing year, and how to be positive and happy with that. So that's the episode gonna be about. I am so excited to talk about it, or please stay tuned because it's gonna be worth it. So most of the time जब साल end हो रहा होता है, we are sad because obviously the year is ending and we feel कि we haven't done a lot, we haven't achieved a lot. Maybe हमने कोई सोचा था कि हमने इस साल हमारा ये काम हो जाए, वो नहीं हुआ. Maybe we just feel sad कि the year went by so fast and एक और साल ज़िंदगी का ख़त्म हो गया और पता भी नहीं चल रहा ज़िंदगी कहाँ जा रही है, और वो सब कुछ. Obviously, it's very natural to feel sad कि the time is going by so fast, or you feel कि you haven't done anything, or maybe there could be other fear. Obviously there could be a fear of getting older, and we have talked about that in detail in another podcast, so you can check that out. लेकिन बात ये है कि वक्त गुजर है. अगर आप सोचोगे तो भी टाइम गुजर जाना है, अगर आप नहीं सोचोगे तो भी टाइम गुजरना है. यू कैन नॉट स्टॉप टाइम, और इफ़ वी विल कीप
regretting about our past or keep living in the past के मैंने अपने टीनेज टाइम में ये नहीं किया, मैंने अपने टीनेज टाइम में ये नहीं किया, मैंने अपनी अर्ली 20s में ये नहीं किया. तो जो टाइम आपके पास अभी है, मे बी इट्स योर लेट 20s, मिड 20s, और यू जस्ट टर्न लाइक अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे टर्न 20 और वो टीनेज से बाहर चले जाते हैं, तो दे थिंक कि दे हैवंट एंजॉयड देयर टीनेज इनफ. एंड दिस इज व्हाट आई फेल्ट टू. लेकिन now when I'm living in my 20s, तो I realize कि I am enjoying my 20s more than I have enjoyed my teenage. लेकिन since there is this thing created by our own society कि teenage is a good era or teenage is the time when you feel the most young, इस वजह से you feel कि you are losing your youth in teenage when you're not seeing what's forward for you, right? तो मुझे लगता है कि इस वजह से हम हमेशा अगर हम यही सोचते रहेंगे ना कि ओ आई हैवंट लिव्ड अनफ पहले, तो यू वॉन्ट बी एबल टू लिव इन द करंट टाइम. और अगर मैं अभी ये बैठ के सोचूंगी कि मैंने 2023 में कुछ नहीं किया, क्योंकि लेट मी टेल यू, आई विल शेयर माई गोल्स आगे 2024 के, और उनमें से 50% जो है ना वो मैंने 2023 के भी सेम गोल थे, आई डिडंट डू एनीथिंग. दिस इज सो एम्बैरसिंग. लेकिन I don't feel bad or I don't feel कि oh I didn't do anything or I wasted my year और ये नहीं हो सकता था, वो नहीं हो सकता. I felt really happy this year, and maybe I didn't got the professional growth I wanted, maybe I didn't got maybe I didn't save the money that I wanted, maybe I didn't achieved anything. लेकिन I have this inner satisfaction because मतलब I lived my year happily and I enjoyed. और मुझे लगता है कि this podcast is a big part of me feeling satisfied, क्योंकि at least I have a podcast जिस पे I can like help someone or make someone's day and it makes me happy. And I am happy that के within my boundaries and the things I had access to, I made this like community where we talk about so many positive things. So I think कि it is important. और मुझे लगता है कि obviously अगर मेरी podcast ना होती तो I would have felt more bad. लेकिन मुझे लगता है कि इसीलिए अगर मैंने podcast ना बनाई होती तो I would have been thinking, जैसे मैं पिछले 4 साल से podcast बनाना चाहती थी और मैं नहीं बना पाती थी. तो मतलब कि one day I finally decided कि I'm gonna do it and it happened. तो इस वजह से मुझे लगता है कि if you will keep thinking कि oh I didn't started when I was 17 years old and 18 years old, तो you are not doing any help, क्योंकि you're still 22, 23 or 21 and you can still do it. You're still young. किसी चीज़ की भी कोई age नहीं होती. And again, there are so many things that you are bound to experience later in life. Not everything is gonna happen for you when you're a teenage. Not every fun thing is gonna happen to you when you're a college student or a university student. Not everything is gonna happen for you when you're in your early 20s. बहुत सी अच्छी चीज़ें आपके साथ mid 30s में भी होंगी, 30s में भी होंगी. So इस वजह से we have to always look forward to the time that is coming, क्योंकि there's a lot of fun that is waiting for you. हमने जो है ना लिमिटेड कर दिया टाइम कि हम इंजॉय सिर्फ 25 एज तक कर सकते हैं हम, या फिर सिर्फ टीनेज इंजॉय करने का टाइम है, सिर्फ जो है वो ग्रेजुएशन से पहले का टाइम इंजॉयबल है. when you are an adult, तो there is no enjoyment left in life. लेकिन I think there is a lot to look forward, and अगर हम अपनी पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखेंगे तो फिर जो है we won't be able to enjoy life and be happy, and we gonna die one day anyways. अगर हम बैठ के सोचेंगे कि मैंने कुछ नहीं किया तो भी मैंने मरना है, अगर मैं मतलब कि if I live my life every single day तो भी मैंने मरना है, और टाइम वैसे भी गुजरना है. तो इस वजह से मुझे लगता है कि मतलब it's just important for you to have a positive approach and to look forward and to seek opportunities where you can like look forward to things. तो इस वजह से मुझे लगता है कि आई डोंट नो इफ दैट मेक्स एनी सेंस, लेकिन इस वजह से मुझे लगता है कि obviously we do feel sad when we are turning older or when the year is ending, but we should look at what's coming
instead of what we lost or what is gone. Okay, now, is having a new year goal important? Is having a new year resolution necessary? Well, it's not necessary. I asked my sister, okay, what's your resolution? Do you have any resolution? She said, "Okay, I don't have any resolution. I'm just gonna go with the flow." And I think that's great if that is what works for her. And I was doing that too once. Like in Abak, especially because I am at home and there's nothing really exciting happening for me in life, and I have to like seek opportunities to do something interesting. इस वजह से मुझे लगता है for me, I love to have a new start, और इस वजह से I love having New Year goals and resolution because it gives me a sense of okay, I'm like starting over and things are new and my mind is fresh. So I love getting into things with a fresh mind. So even if my goals are the same that I had like 1 year ago, I think I have a chance to start over and to do things again with a fresh mind. तो इस वजह से I took my December off कि मैंने कुछ भी नहीं करना, और इसमें I'm not gonna like do something extra, और मतलब कि I'm gonna put effort to do something because I want rest, and I'm gonna think about the things I want to do for the next year, and फिर for the next year I can start fresh. Obviously मुझे लगता है कि आप पे इस चीज़ का जो है वो आप पे ज़रूरी नहीं है कि you can start it from December, from 1st January. For me, you would have noticed that every new season is a new start for me because there's a change in environment. So I love going in with things with a fresh mind, or I love changing it a bit. So with the change of season, I love changing my schedule, or I love मतलब कि revising my goals कि what I want to do for the next 3 or 4 months. तो मुझे लगता है कि और मुझे लगता है कि for me, every Monday is a new start to a week. Every day, obviously, every day is a new opportunity, and you can always just, whenever you feel low or you feel exhausted, you can always just, मुझे लगता है कि it's the best to take a step back and relax and think कि oh, I'm gonna start this next week, or I'm gonna start it 2 दिन के बाद. Because again, every Monday, every day is a year you can like start over and start something new, or you can just start fresh with the thing you were already doing but with a new mind, with a new energy. Okay, so for me, I think having New Year resolutions is like important for me, or it's like refreshing for me, fulfilling for me कि मैं उस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, and all these things are like either physically or spiritually nourishing, and I want to do it for myself and for my personal or professional growth, or मतलब कि that would make me a happier person or a better person or a successful person, and I'm thinking about the things that I think that are gonna make me happy, and I'm thinking about how I'm gonna work on it. So मुझे लगता है कि for me, thinking about all these things are like gives me a better like मुझे लगता है कि it gives me strength, or makes me think about myself more, know myself more, or मुझे लगता है कि it makes me stronger. I don't know how to explain it better. Like, I think it makes me feel more put together. कि oh, I know what I want. I know what I want for myself this year. तो मुझे लगता है कि yes, it is not necessary to like आप 1st January से ये नहीं होना, लेकिन मुझे लगता है कि where we feel sad कि ये साल ख़त्म हो रहा है, तो instead of that, I have started to think about the things I already want to do next year, and that makes me look forward to the next year. Everything we are doing, मुझे लगता है कि end goal at the end of the day is for us to be happy. So instead of thinking कि oh, मैंने इस साल ये नहीं किया, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अगले साल क्या कर सकती हूँ, और मैं किस तरह कर सकती हूँ, और मुझे क्या क्या करना है. तो मुझे लगता है कि that is more positive approach, and that is the way you can look forward to life. इस वजह से I love having goals for myself, little goal for myself that I can do.
Now, the next thing is that do not compare yourself to others. You feel bad because you think कि कोई और इंसान जो है ये जॉब भी कर रहा है, इसकी पढ़ाई में भी अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ है, मतलब दे हैव अ बेटर जॉब और दे आर अर्निंग मोर, और जो भी आपको लगता है कि दे आर डूइंग बेटर, एंड वी आर ऑफ सेम एज और हमने एक ही डिग्री की है, लेकिन आई एम मतलब कि नो वेयर नियर देम. मुझे लगता है कि सबसे पहले वी हैव टू स्टॉप कंपेयरिंग आवर सेल्फ विद अदर्स. और आई नो कि इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग जब आप कहीं होते हो एंड समवन इज टेलिंग कि ओ आई एम डूइंग दिस एंड दैट, और मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, या फिर और मे बी आई एम गेटिंग अ जॉब टू, आई एम वर्किंग ऑन 2 jobs, और ओ व्हाट आर यू डूइंग, और मतलब दे जस्ट स्टार्ट मेकिंग यू फील बैड. और मतलब कि आई वुड हैव दिस ever since I graduated I would feel that so much, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती थी, और बेशक मेरे अपने बैच फेलोज हैं, बेशक मुझसे सीनियर हैं, दे वुड ऑलवेज आस्क मी कि ओ व्हाट यू आर डूइंग और व्हाट यू हैव डन, और मतलब आर यू बस मतलब आर यू सीकिंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़, ये कर रही हो, वो कर रही हो, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. और आई वुड गेट सो कन्फ्यूज. सो दिस वॉज समथिंग माई ब्रदर टोल्ड मी कि if you think you are doing better than you were doing last year, तो मतलब that's all that you should care about. And he was so right, क्योंकि उसके बाद से मैंने ये सोचना छोड़ दिया है कि अगला बंदा क्या कर रहा है. अगला बंदा जो है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है और वो मुझे भी कन्विंस कर रहा है कि तुम भी करो, या फिर अगला बंदा जो है वो यूके का वीज़ा अप्लाई कर रहा है, या फिर कहीं बाहर पढ़ने जा रहा है, और या फिर जो है वो 2 जॉब्स कर रहा है, और या फिर मतलब कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो भी है ना. आई शुड नॉट कंपेयर माई सेल्फ टू देम, क्योंकि वी आर 2 different people with 2 different mentality, 2 different mindset, 2 different life, 2 different people around us, different environment. मुझे लगता है कि other people should be a reason for you to be inspired and to do better. लेकिन if someone's success or someone being at a position is making you feel insecure about yourself, तो मुझे लगता है कि ऐसे इंसान आपको इंस्पायर नहीं कर सकता, और ऐसी इंस्पिरेशन लेके क्या करना है. तो मुझे माई ब्रदर टोल्ड मी कि यू शुड लाइक स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर पीपल, एंड दिस इज़ वॉट आई एम गना लाइक advise you to stop comparing yourself with other people. Compare yourself with yourself. If you are doing better this year than you were doing last year, तो you won, मतलब कि you did well. And if you are not, तो इसका मतलब ये है कि we will try to do better next year. ठीक है. When you will think of yourself as a competition कि I just have to excel myself, I have to outdo myself, मुझे अपनी लास्ट परफॉर्मेंस से बेहतर परफॉर्मेंस देनी है, मुझे किसी और के साथ नहीं भागना. अगर आप ये सोचोगे कि मुझे 5th पोजीशन लेनी है, या फिर मुझे इससे बेहतर 5th पोजीशन, ये मैं क्या बोल रही हूँ अगर आप ये सोचोगी कि मुझे इस इंसान से ज़्यादा CGPA लेना है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत मुश्किल होगा. लेकिन अगर आप ये सोचोगी कि मुझे अपने पुराने CGPA से इम्प्रूव करना है, तो दैट वुड बी मोर ईजियर फॉर यू. The mindset we're gonna end this year with is that I am not a part of any race. I am not competing with anyone, be it my cousin, be it my friend, who has a different life, who has different opportunities, different life, different situation going on. ठीक है. And the mindset we're gonna start the new year with is that I'm gonna do better than I did last time. I'm gonna outdo myself. I'm gonna excel myself. जब आपका अपने आप से कंपटीशन होगा ना, तो आपको होगा कि मुझे लगता है कि excelling everyone else is very मुझे लगता है कि exhausting to think about. And you will never be able to do that. You will never be able to be the most successful person or the most richest person. Obviously, you can be that. लेकिन मुझे नहीं लगता कि that's the goal you should be with. You should just think कि I'm gonna do better than I did last time. ठीक है? I'm gonna earn more than I did last time. I'm gonna make
a more delicious meal than I did last time. I'm gonna run an extra mile than I did last time. So it would be better. I'm gonna have a better CGPA than I had last time. मुझे लगता है कि that would lead you to success more when the only person you will be seeing is yourself, and now how you will outdo yourself, how you will excel yourself, and that would make you love yourself more too, because every time you will do better than you did last time, you will like love yourself. Okay, oh, I did that. Oh, I had this like little competition with myself and I did that. And you don't hate anyone in that too. But you can't hate yourself. So you will just love yourself for doing that. And also you'll be unbothered and other people won't be able to mess around with you. Two more things before we start talking about the goals, my goals, and how I have made those goals and all those things, is that first of all, believe in yourself, love yourself. Okay? You cannot do anything and you cannot do anything happily if you do not enjoy yourself. You need to really enjoy yourself and you need to love yourself. And I know, okay, you hear this thing so many times, love yourself, and you don't know how to love yourself. So I'm just gonna tell you to enjoy yourself. Or by enjoying yourself, obviously you are confident in yourself, and by enjoying yourself, you are loving yourself, you respect yourself, and you're happy with yourself. Be content with yourself, be happy with where you are, and you can you can do self growth, you can groom yourself, you can read things or watch things that could nourish your soul, you can think about the good things. So मुझे लगता है कि you can treat yourself so kindly and you can enjoy yourself, you can enjoy your little time alone, you can enjoy the way you perceive things or the way you handle things. तो मुझे लगता है कि to have goals or to do anything in your life that you really want to do, first of all, you really need to believe in yourself and enjoy yourself. Ki, yeah, I got this. Varna, it would be difficult to achieve something alone because you just have yourself. And if you are not enjoying yourself, if you are not believing in yourself, तो फिर how would you be able to go with yourself that far? I don't know. मतलब कि I hope that makes sense. I'm gonna say this so many times because all of these, I apply these things for myself. And I don't know how they sound for you guys. The next thing is that you know yourself best and what works for you. I am making a goal and resolution for my best because I know that works for me. I take rest when I know that works for me. I enjoy seasons. I enjoy new seasons because I know that makes me excited. You know what works for you. You know the things that make you excited. You know how to look forward in life. So it's very important that I know myself best and the things that work for me so that I can organize my life and manage my life according to that. The thing that drive me, the thing that makes me more excited about life, the things that make me love more. ठीक है ना? तो इस वजह से मुझे लगता है कि maybe the things that I think work for me might not work for you. तो इस वजह से two things that, first of all, enjoy yourself, enjoy being a woman, enjoy being whoever you are, a man, or a man, or a daughter, or a sister, or a wife, a mother, whatever. Or secondly, know yourself, what works for you, what drives you, what makes you passionate, ठीक है? So what makes you happy? So this is very important whenever we are starting something new or whenever we have a goal, because if you have this thing and you're just stressing about it, or it's not making you look forward to life, then what's the point in doing all of this? Okay, goals. Now, this is not originally my idea. I saw a girl on TikTok talking about this, but I thought that's genius. So she was talking about she made her New Year vision board, which is something I never did. मैं हमेशा
लिखती थी, लेकिन मैंने कभी विजन बोर्ड नहीं बनाया. लेकिन शी गेव दिस आइडिया टू मेक अ विजन बोर्ड एंड पुट इट एज अ वॉलपेपर ऑन योर लैपटॉप. आई यूज माई लैपटॉप अलॉट बिकॉज ऑब्वियसली आई वर्क ऑन इट, आई एडिट ऑन इट. तो मैं अपनी ज़िंदगी का मेरे ख्याल से अपने दिन का 1/4 हिस्सा लैपटॉप पे गुजारती हूँ. Or I do also have a screen, so which is also attached. So I think for me, having a vision board and seeing the goals visually every single day would like have a positive impact for me. So I am gonna make a vision board. You can make a vision board and set it as your wallpaper. It will look nice and it will remind you of the things that you always wanted to do and you want to do this year, and maybe you can plan about them. Now, she also talked about the things goals need to be smart. This is actually, I learned this in my management class and I was like, oh my god. So I learned this in my management class. So your goals need to be smart. SMART. S stands for specific, M stands for measurable, A stands for achievable, R stands for realistic, and T stands for time. And we'll go into every single letter in a while. But right now we'll go into it. So with examples, obviously, how you can make your goals smart. और मैं अपने उसका एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है ना. S stands for specific. Specific का मतलब है कि it should be clear, well defined. मतलब you should think about it. कोई बंदा मतलब कि जैसे मैंने ये सोचा है कि आई वॉन्ट टू बी बेटर इन ड्राइविंग, ठीक है, लेकिन आई कैन थिंक कि आई ड्राइव 5 minutes एवरी डे. और दैट वुड मतलब कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूंगी ना कि आई एम गोना बी बेटर इन ड्राइविंग, तो मैं उस चीज़ को डिले करती रहूँगी कि आई हैव अ होल ईयर टू बी बेटर इन ड्राइविंग. लेकिन इट्स ऑलवेज द लिटिल स्टेप्स. तो इफ आई एम गोना से कि आई एम गोना वेक अप एट 9 a.m. daily and gonna drive for 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. I'm just gonna मतलब कि unpark the car and park it. Unpark, is that a word? और ऐसे करके, या फिर if you want to be fit, तो आप सिर्फ ये सोचो कि I want to be fit. लेकिन if you think कि no, I'm gonna jog for 5 minutes daily and then work my way up, or I'm gonna build my stamina, तो दैट इज़ मोर स्पेसिफिक, क्योंकि यू नो वॉट यू गना डू एवरी सिंगल डे. अगर आप ये सोच लोगे ना कि मैंने ये करना है, लेकिन आप अपने काम ये नहीं सोचोगे कि हाउ दिस विल हैपन, ठीक है ना, हाउ मच टाइम दिस विल टेक, मुझे कितना कितना करना है. अगर आप अपने काम को डिवाइड नहीं ना करोगे तो काम बहुत मुश्किल हो जाएगा अपेरेंटली देखने में. जैसे अगर मुझे ये पॉडकास्ट स्टार्ट करनी थी तो मैंने सिर्फ ये नहीं सोचा कि ओ माई गॉड मुझे पॉडकास्ट स्टार्ट करनी है. ऑब्वियसली मैंने ये भी सोचा 3 सालों के लिए, लेकिन व्हेन आई एक्चुअली वाज अबाउट टू स्टार्ट इट, तो आई डिवाइडेड माई क्वेश्चंस के हाउ आई एम गोना एडिट इट, हाउ आई एम गोना रिकॉर्ड इट, मतलब कि ऑल द कंसर्न्स दैट आई हैव, हाउ आई एम गोना अपलोड इट, वेयर आई एम गोना अपलोड इट, व्हाट्स मतलब कि वो सब कुछ. तो ताकि इफ़ यू विल डिवाइड योर गोल्स इन पार्ट्स and be specific about it, कि this is what I want to achieve and this is how I'm going to achieve it. So this is like more specific. So whatever goal you have in your mind, you need to be specific about it. If I want to save money, so I just can't be like, I'm gonna save money. I'll be like, I'm gonna just go out with my friends twice a month or once a month. I'm gonna spend this much amount of my salary and I'm gonna save this much amount in my bank. ठीक है? तो मुझे लगता है कि I hope that was enough example to know कि just do not think about the goal, but also be specific about it. कि what, why, how, और तीसरा क्या था, what, why, how, ये काफ़ी. तो yeah, you need to be specific and you need to divide your work. वरना अगर आप सिर्फ एक गोल सोच लोगे ना कि मुझे 2024 में ये करना है, तो it would be difficult to achieve it. तो इस वजह से you need to like break down. Smart का S clear है, specific. Second is measurable. Measurable means कि you can measure your progress towards accomplishment of the goal. Again, अगर आपका goal specific है और आपने वो goal divide किया हुआ है, जैसे अगर आपने 5 minute walk करनी है और आपका स्टेमिना बिल्ड हुआ है और आपने फिर जो है आपने सोचा कि मैं 5 दिन बाद जो है वो 10 मिनट करना शुरू कर दूंगी या 7 मिनट करना शुरू कर दूंगी. या फिर मैंने जैसे अपना मेजरेबल है, मतलब कि अगर मैंने ड्राइविंग करनी है तो आई एम लाइक कि
मैं सिर्फ अपनी लेन में ड्राइव करूँगी और उसके कुछ अरसे बाद आई विल स्टार्ट ड्राइविंग इन माई सोसाइटी, और अगर इफ़ आई कीप डूइंग दैट देन आई कैन गो आउटसाइड माई सोसाइटी. तो यू कैन लाइक measure योर गोल कि इतने अरसे बाद आई विल स्टार्ट डूइंग दिस, इतने अरसे बाद आई स्टार्ट डूइंग दिस. कि एक बार आपने सोच लिया कि मेरा ये गोल है और फिर आपने उसको डिवाइड कर दिया कि मैंने इतने टाइम में ये चीज़ें अचीव करनी है, तो इट इज़ measurable. कि आप जो है वाई एम लाइफिंग, कि आप अपने जो जर्नी है, जो अकम्पलिशमेंट है उस गोल की, उधर तक देख सको और आपके सामने एक रास्ता है जो आप मैयर भी कर रहे हो. आई होप दैट मेक सेंस. आई होप के इट्स क्लियर कि हाउ यू गना मैयरेबल, मतलब व्हाट टाइम यू कैन सेट कि मुझे इतने टाइम तक ये करना है और इतने टाइम तक ये करना है, ताकि यू कैन लाइक मैयर कि ओ मुझे इतने टाइम तक, मतलब कि ताकि देयर इज़ दिस डिफाइंड टाइम कि मुझे इतने टाइम तक ये चीज़ करनी है. ठीक है. नेक्स्ट इज SMA. A स्टैंड्स फॉर अचीवेबल. नाउ अचीवेबल का मतलब ये है कि वो गोल आपको रखना है जो कि पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए, जो आप कर सकते हो. और दैट्स प्रीटी मच क्लियर आई थिंक कि अगर मतलब आई थिंक दैट इज़ क्लियर. अगर मैं सोचूं कि आई वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड, I know that's not possible for me. मतलब if I want to go, I will say I want to study abroad. I know that that's not possible for me, so I cannot make a goal that is not possible for me right now or anytime. So, or if someone is like, oh, I want to like move out. I don't know. Like whatever thing you think is not possible for you is like, मतलब don't make that. और someone says कि I'm gonna lose this much weight when it's not possible. और मैं ये सोचूं कि बस मैंने कल से गाड़ी, मतलब कि ऊबर चलाना सोच लेनी है, जबकि मुझे गाड़ी भी नहीं चलानी आती, तो that is not possible. Next is SMAR, realistic. Realistic and achievable are like same but not same, लेकिन realistic mean within reach, मतलब आपके पास उस चीज़ की access है. जैसे मेरे लिए अगर पॉडकास्ट बनाना मेरा गोल था, मेरे पास एक्सेस थी पॉडकास्ट बनाने के लिए, लेकिन वीडियो पॉडकास्ट बनाने की मेरे पास एक्सेस नहीं थी, तो वो मेरे लिए एक रियलिस्टिक गोल नहीं था और नहीं है. तो इस वजह से मुझे लगता है कि जो भी आप गोल बना रहे हैं वो आपके रीच के होना चाहिए या फिर आपकी बाउंड्रीज में होना चाहिए, जो भी आपने अपने लिए सेट की हुई हैं, जो भी आपके पास एक्सेस है उसमें होना चाहिए. और ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि आप नहीं एंड स्टिल यू वांट टू अचीव इट, तो आप देखें कि उसका सब गोल क्या है और पहले मैं वो करूँ और फिर मैं उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाऊँ. यू कैन नॉट बी रिच एक ही साल में या एक ही दिन में. यू कैन नॉट हैव एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस एक ही साल में. यू कैन नॉट मतलब कि डू अ लॉट ऑफ थिंग्स और क्लियर अ लॉट ऑफ थिंग्स इतने से टाइम में. तो आप पहले उसका जो है वो सब गोल या फिर उससे छोटा गोल सोचो और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी डेस्टिनेशन की तरफ. नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज टाइमली. टाइम. अब टाइम का मतलब ये कि यू शुड हैव अ टारगेट डेट. नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक के a lot of people hate deadlines, और obviously I hate deadlines too, लेकिन मुझे लगता है कि deadlines और a target date are also important because they create urgency. ठीक है. जैसे मैंने अपने लिए लास्ट ईयर इस टाइम सोचा था कि मैंने जनवरी के फर्स्ट वीक में 2023 में अपनी पॉडकास्ट डाल देनी है, तो मुझे अर्जेंसी थी कि मैंने ये करना है एंड आई हैव टू डू इट. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बता दिया था कि आई एम डूइंग इट, ताकि मुझे आई कुड बी हेल्ड अकाउंटेबल. तो इस वजह से आई शेयर थिंग्स लाइक दीज ऑन पॉडकास्ट ऑन इंस्टाग्राम, ताकि आई कुड बी हेल्ड अकाउंटेबल. तो अगर आप अपने लिए एक डेट सेट करोगे ना, तो मुझे लगता है कि इट्स मोर it will create an urgency, or sometimes it works for us. Obviously मुझे लगता है कि it's your goal, and अगर आप उस टाइम तक वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते, तो obviously you can always extend the date, or the world's not gonna end and you can do it. लेकिन अगर आप यही सोच के बैठे रहोगे ना कि वो मैं कभी भी कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में, तो ऐसे काम नहीं होता. अगेन you know yourself better, and you know कि if deadline is a better thing for you, or if the thought के oh I can do anytime is better for you. मुझे लगता है for me both of the things work, और I use it as per convenience. जब मुझे लगता है कि I'm gonna be lazy if I'll think कि मैं कभी भी ये काम कर सकती हूँ, तो आई विल बी लेजी एंड आई विल नेवर डू इट. तो फिर मैं ऐसी चीज़ों में जो है वो अपने लिए डेडलाइन डाल देती हूँ.
टू क्रिएट अर्जेंसी ताकि मैं वो चीज़ कर सकूँ. लेकिन अगर मुझे पता है कि इफ़ आई एम गोना क्रिएट अ डेडलाइन फॉर समथिंग इट विल स्ट्रेस मी आउट एंड आई एम नॉट गोना डू इट एनीवेज, तो उसमें फिर मैं अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ कि नहीं रबिया, यू हैव टाइम, दैट यू क्रिएटेड योर गोल, यू कैन गिव योरसेल्फ मोर टाइम, यू कैन एक्सटेंड इट. तो इसलिए मुझे लगता है कि समटाइम्स अर्जेंसी इज गुड, समटाइम इट्स नॉट गुड. यू हैव टू सी कि हाउ इट वर्क्स फॉर यू. जैसे अगेन विद माई पॉडकास्ट, मुझे पता था कि अगर मैंने अपने आप को कहा कि ओ माई गॉड आई हैव द होल टाइम, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू रिलीज इट इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, तो मैंने कभी भी रिलीज नहीं करनी थी और मैंने अभी तक बैठे रहना था. लेकिन सिंस आई हैव अ सेट टाइम, और फिर उसके बाद अ लॉट ऑफ पीपल वर लाइक कि यू शुड नॉट लाइक डिसाइड कि मैंने बस हर वेडनेसडे एपिसोड लगानी है क्योंकि समटाइम्स यू वॉन्ट बी एबल टू. लेकिन आई थिंक सिलेक्टिंग अ स्पेसिफिक डेट हैज़ बिन रियली गुड फॉर मी बिकॉज आई नो कि आई नीड टू रिकॉर्ड टिल ट्यूसडे एंड एडिट इट एंड अपलोड इट. तो गिविंग योर सेल्फ अ डे, इवन दो अगर मैं किसी वेडनेसडे को नहीं लगाती, इट्स मतलब कि इट्स नॉट गोना डू एनीथिंग, लेकिन फॉर मतलब कि इट्स गुड एंड आई लाइक द फैक्ट कि आई हैव दिस सेट टाइम एंड डेट एंड दिस डेडलाइन जब तक मुझे अपनी एपिसोड बना के अपलोड करनी है, राइट, इन माई हेड. तो इस वजह से मुझे लगता है कि टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ़ यू थिंक कि यू आर लाइक डिलेइंग समथिंग फॉर सो लॉन्ग, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है अपने आप को थोड़ा सा जो है वो अर्जेंसी डालें और अपने लिए कोई डेडलाइन, टारगेट, डेट सोचें. So that's smart. That's what SMART stands for. And that's what you need to think before deciding your goals. Now, this is what I said in my very first podcast, which is titled as Why Our New Year Resolutions Don't Work. And this is what I'm saying this time too. We have to, like, अगर हम अभी बस सोच के बैठ जाएंगे ना और फर्स्ट के बस करना है, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ नॉट इनफ एंड वील गेट बोर्ड ऑफ इट आफ्टर अ वाइल एंड वील जस्ट नॉट कंटिन्यू इट. और हमें लॉन्ग टर्म सोचना है और हमें लॉन्गटिविटी, इज़ दैट द राइट वर्ड, वो सोचना है. इस वजह से व्हाट आई लव टू डू इज़ दैट कि आई डिवाइड माई ईयर इन पार्ट्स. और मुझे लगता है कि आफ्टर एवरी पार्ट, जैसे आई एम डिवाइडिंग, जैसे अ लॉट ऑफ पीपल डिवाइड देयर ईयर इन क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर इज लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, और फिर आगे फिर आगे फिर आगे. व्हाट it happens is that कि right now I am thinking about the first 3 months, और उसके बाद जब वो मंथ ख़त्म होंगे तो फिर मैं क्वार्टर 2 का सोच रही हूँ, और फिर जब वो ख़त्म होगा मैं क्वार्टर 3 का सोच रही हूँ, जब वो ख़त्म होगा मैं क्वार्टर 4 का सोच रही हूँ. तो आई थिंक फॉर मी what really works is that कि I am dividing my year into 4 parts. क्योंकि yes, you have these goals but you don't know कि what's gonna come in life for you. आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या होना है और मे बी उसकी वजह से आपके गोल्स चेंज हो जाए, ठीक है. तो इस वजह से मुझे लगता है कि फॉर मी आई लव डिवाइडिंग माई ईयर एंड आई मोस्टली, यू माइट हैव नोटिस कि आई मोस्टली डू इट विथ सीजन. तो मतलब विंटर में मेरे अलग तरह का गोल्स होते हैं, स्प्रिंग में अलग होते हैं, समर में अलग होते हैं और फॉल में अलग होते हैं. तो आई लव डूइंग दैट विथ सीजन क्योंकि आई थिंक देयर इज जस्ट समथिंग सो रिफ्रेशिंग एंड आई लव द चेंज ऑफ सीजन्स एवरी टाइम एंड आई लव सीइंग द पॉजिटिव. और मुझे लगता है कि न्यू सीजन्स कम विथ सो मेनी थिंग्स. इट कम्स विद न्यू एक्टिविटीज़, न्यू hope, new fruits. तो मुझे लगता है कि I love like setting it up with seasons. Now what I'm gonna do, and this is what you guys need to hear, is that के 10th March से start हो रहा है रमज़ान. और मतलब कि it's very shocking to me कि रमज़ान is starting very early. तो I am actually gonna take it's still winter and then it's gonna be spring. तो मुझे लगता है कि मैंने जो ज़्यादा जो हार्ड कोर काम करना है या फिर मैंने जो हार्श काम करना है, जो प्रोफेशनल काम करना है, वो मैं रमज़ान के बाद करूँगी, ईद के बाद. और फॉर मी राइट नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग फॉर द टाइम टिल रमज़ान. तो रमज़ान अगर 10th मार्च तक है तो मैं सिर्फ अभी जनवरी फरवरी का सोच रही हूँ क्योंकि रमज़ान में ऑब्वियसली आपकी रूटीन सारी चेंज हो जाती है. उसके बाद ईद है और उसके बाद आई री थिंक कि अब मुझे अपना क्या स्केड्यूल बनाना है. और आई कैन लाइक यू कैन ट्राई दिस थिंग टू. सो अभी जो है हम पूरे साल का नहीं सोच रहे, हम सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर भी नहीं, पहले 2 महीने और 10 दिन का सोच रहे हैं, विच आर गना बी गुड मंथ्स. खज मुझे पता है, आई नो फॉर द फैक्ट के सम ऑफ यू हैव एग्जाम्स, ठीक है, सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं कुछ लोगों के,
और उसके बाद उनको जो है वेकेशंस होंगी. सम पीपल हैव स्प्रिंग हॉलीडेज, सम पीपल स्टिल हैव वेडिंग्स, सम पीपल हैव बोर्ड एग्जाम्स. तो आई डोंट नो, मतलब कि वो तो आपको अपने टाइमलाइन से अरेंज करना है. लेकिन फॉर मी it's like a January is still like a good month, और उसमें मतलब कि the weather is really nice and it's cozy and it's cold, so I can still enjoy that. Obviously I have to be productive, लेकिन January and December are the same thing, so I'll take January as I take December, and I'll still watch good stuff, or read books, and I'll still enjoy winters because it's not gonna last in February. February is the start of spring, मतलब कि February mid. तो आई ऑल्सो हैव टू बी एक्साइटेड फॉर स्प्रिंग, और आई एम सो एक्साइटेड फॉर स्प्रिंग. एक तो मेरे नाम का मतलब भी स्प्रिंग है, रबिया मीन्स स्प्रिंग, बहार, तो इस वजह से आई फील मोर कनेक्शन विद स्प्रिंग सीजन. तो इट्स गonna बी स्प्रिंग, वेरी नाइस वेदर, वेरी एक्साइटिंग. और उसके बाद रमज़ान विल स्टार्ट. तो अभी सिर्फ हमें सर्वाइव करना है रमज़ान तक, और उसके बाद वील रीथिंक. तो इस वजह से आई एम जस्ट गोना टेक थिंग्स वेरी ईजी. जनवरी और फरवरी आई एम गोना रियली एंजॉय लाइफ. उसके बाद रमज़ान है, फिर ईद है, उसके बाद आई विल बी हार्ड ऑन माई सेल्फ एंड वर्क हार्ड, जो मुझे अपने प्रोफेशनल गोल्स अचीव करने हैं उन पे. ठीक है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि देयर इज सो मच कम्फर्ट इन थिंकिंग कि रमज़ान इज़ कमिंग सो सून, बिकॉज ऑब्वियसली योर लाइफ गोना चेंज. एंड as I said के we like change, और मतलब कि our routine is change, or obviously it's a spiritual month, but at the same time I don't know what better word is to describe it, लेकिन it's also a festive month. मुझे नहीं पता कि ये सही word है describe करने का कि नहीं, लेकिन we feel extra happy, मतलब कि because of the spiritual environment we feel extra happy, we are more giving, we are more like, I don't know, it just makes us happy. तो इस वजह से I just say कि it's a festive month, लेकिन maybe that's not the appropriate word to use for it, लेकिन it just makes extra happy, it's just extra special for us. We all are very excited and happy for this month. तो इस वजह से it makes me really happy. तो I'm repeating things, लेकिन basically what I'm trying to say is that कि I have divided my years into parts, और पहला part जो है वो मेरा ईद तक है. ठीक है, उसके बाद ईद के बाद I'll go like hard on myself and I'm gonna achieve the goals that I'm gonna tell आगे. और उसके बाद फिर मुझे लगता है कि पूरा समर्स ऑब्वियसली वो होगा, और उसके बाद फिर सितंबर में फॉल है, तो फिर फॉल से I can again start taking things easy, right? And still achieve the goals I have. So I don't know if that parting and dividing the year works for you too. Lekin I just want to give you some sort of comfort कि you don't need to be productive January से. You can be easy on yourself, and जैसे मैंने सोचा हुआ है कि मैं second quarter में I'll do more hard work, you can do that for yourself too. Some people obviously are in university, so they can divide maybe their year in 2 halves, क्योंकि एक fall semester होता है और एक spring semester होता है, और they can divide their semester in 2 half के एक mid term से पहले का टाइम है और एक mid term से बाद का टाइम है. तो मुझे mid term से पहले अपनी मतलब outings वगैरह रखनी है, या अपनी मतलब कि ये goals achieve करने, और mid term के बाद मुझे शायद पढ़ाई में ज़्यादा टाइम देना और ज़्यादा करना है, इस तरह करना है, whatever works for you. तो this is what I have thought for myself thing. This is what I have thought for myself कि मैंने January February में इतना कुछ नहीं करना. और what I talked about in my New Year resolution podcast is that कि अगर हम मतलब कि सोचेंगे ना कि मुझे बस January 1 में से बस start हो जाना है और बहुत मेहनत करनी है, तो फिर मुझे लगता है कि that won't last long, क्योंकि January 1st is just the next day to December 31st. अगर मैं December 31st को इतनी रिलैक्स हूँ, तो एकदम से मतलब कि I just can't be all chaotic and a mess on January 1st. तो I need to start slowly, or I need to like rethinking or renew and मतलब कि keep मतलब कि resting and then start again and then start again with the whole year, क्योंकि I just can't like say start and keep running for the whole year. बीच में मुझे stops भी लेने हैं, तो इस वजह से मैंने अपने stops decide कर लिए हैं कि मुझे कहाँ कहाँ stop लेना है, ताकि मैं उस stop पे जब हूँ तो फिर मैं अपनी अगली destination पे उस stop पे सोच सकूँ. क्योंकि मैं अभी
जनवरी 1 पे खड़ी होके December 31st 2024 के बारे में नहीं सोच सकती. Okay. I hope that made sense. Or again, every single season for me, yeah, every new semester, every new month, every new Monday, every new day is where you can like start fresh. Or is वजह से it's important to just divide your year in the time that is convenient for you, ताकि you can look forward. और मुझे लगता है कि for me it's easy to do it with seasons. ये जैसे मैंने रमज़ान का सोचा, ऑब्वियसली रमज़ान के बाद समर स्टार्ट हो जाएगा, तो इट्स लाइक सीजन्स. रमज़ान के बाद I'll take मतलब कि I'll work in summers and then fall and winter. तो इस वजह से मुझे लगता है for me it's easier क्योंकि my routine change और obviously time changes और वो सब कुछ है. तो I hope that made sense. Okay, so let's talk about my goals. I have divided my goals into like parts. I wrote all down or I divided it into practical goals or hobbies or skills or वो सब कुछ है. You don't need to do it. It's not necessary. मैं वेली थी तो मैंने कर दिया. दूसरा ये कि my goals can change too. It maybe after like first quarter I don't want to do a goal anymore. Maybe I have a new goal. इस वजह से I think it's very important to just divide your year in time, because I cannot like stand here and think about what I'm gonna do till December, because I don't know what else gonna happen for me is saal pura. Anyway, so first of all, let's talk about practical goals, boring goals. So first is that I really want to, like, I don't want to, lekin if it's convenient enough, so I want to enroll in a master's program. Now, let me be open with you guys. I want to and I don't want to do masters, because doing master in Pakistan means that you cannot have a job. My friend is doing masters and it's very hectic. So I don't know, I can't lose my job. I can't afford to do it. So इस वजह से I'm a bit skeptical about it. कि should I do it? My parents really want me to do it. लेकिन they're like कि हर कोई job करता है, तुम क्यों नहीं job कर सकती? Job भी करो, masters भी करो. They're right actually. So इस वजह से I might just enroll in a master's program this year. It's just that also the other concern of mine is that I want to do it from the best university, and the best university is really expensive, so I don't know if it's worth doing it or not. I also would have loved to do it from abroad, lekin I don't think that's happening for me. Lekin I wish I could. Lekin let's see. We don't know what the year have for us. Maybe I will be. Lekin I have my options are open. So agar mujhe koi opportunity milti, obviously I would be able to do it. Like, and the thing is that I'm not gonna just sit here and think, oh, I'm gonna do masters. I'm gonna work for it, right? तो इस वजह से I do have a plan to do masters this year. और अगर मुझे कहीं भी एडमिशन मिला तो मैं कहीं ना कहीं ज़रूर ले लूँगी. If I don't do masters, because again I feel कि maybe it's not worth it कि अगर मैं पाकिस्तान से masters कर रही हूँ, so I really want to start a small business, or it's just very fascinating to me, or I really want to invest in something and then sell something, create something, or think of an idea or wo sab kuch. Obviously I have studied business, so trust me. लेकिन I would really love to, और मुझे लगता है it's the right time, क्योंकि अभी मेरे पास time है to think, to be creative and to launch something. I also have the time to study right now. So इस वजह से if I want do masters, so I'll be doing a business. I would try to have my own business, and to work for it, ताकि मैं एक उस चीज़ में घुस जाऊँ and I can work around it and set goals for the rest of my life. I don't know what business I'm gonna do it. I have ideas, तो इस वजह से अभी मैं disclose नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अभी इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं, और maybe that would not happen. तो इस वजह से this is just what I want to do. I have an idea. Second practical goal is that मुझे embarrassment होती है कहते हुए, लेकिन I literally want to have a hand in driving. It's very embarrassing. जब मैं शादी पे थी अपनी दोस्त के, तो मुझे 2 दिन जो है वो एक लड़की ने पिक एंड ड्रॉप दिया, एंड शी वाज ड्राइविंग एंड शी लुक्ड सो कूल एंड आई लुक्ड एट हर इन ऑफ एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, आई विश आई कुड डू दैट टू. और इतनी धुंध भी थी.
लेकिन I'm really gonna try. If I'm not gonna try, it's never gonna happen, or no one's gonna do anything for me. तो I really want to do it. Like मुझे पता है मैं मास्टर्स कर लूँगी, मुझे पता है अगर मैंने बिजनेस करना मैं कर लूँगी. This is something I feel so helpless in. लेकिन I know कि I have to push myself. No one's gonna do anything for me. लेकिन anyways, that's it. अब next practical goal is that I want to save money. I have not been smart with my finances इस साल. Obviously I got a phone, और मतलब कि a lot of people will say कि मैंने फजूल खर्ची की है. मुझे लगता है कि that was a very smart choice. I also am getting new furniture, तो उसमें भी majorly, लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं पता कहाँ किया पैसा. तो इस वजह से I would try to save money. मैं फजूल खर्ची ज़्यादा नहीं करूँगी. मैं वैसे करती भी नहीं हूँ. I don't know where it goes. लेकिन anyways, I'll try to be more like with it. और my mom really like stresses about it and say कि रबिया तुम बिल्कुल सेविंग नहीं करती, किया करो. और अब इस साल बस देखना मैंने बहुत सेविंग कर दी. और इस वजह से मैंने अपने दोस्तों से मतलब कि सेट टाइम में मिलना है, और बस मैंने महीने में 1 बार या 2 बार मिलना है. इससे ज़्यादा मैंने मिलना ही नहीं है. मतलब कोई बुलाता रहे, मैंने नहीं मिलना बस. वैसे मैं इतना मिलती भी नहीं. आई डोंट नो. अच्छा खैर, इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे. लेकिन आई वॉन्ट टू सेव मनी. नाउ दीज आर द प्रैक्टिकल बोरिंग गोल्स, और ये हमारी साइड से हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पिरिचुअल गोल्स. मुझे लगता है कि विद नमाज अल्हम्दुलिल्लाह एंड माशाल्लाह कि आई थिंक कि नाउ लाइक इट्स माई पार्ट ऑफ रूटीन. और इस पूरे साल आई थिंक आई हैव बीन कंसिस्टेंट विद प्रेइंग. लेकिन I have not been consistent with Fajr, which is very embarrassing again, or I need to do that. Like, मतलब the only excuse I had was that कि obviously मतलब कि I work at night, तो मैं सोती इतना लेट हूँ, तो फिर मैं 1 घंटे बाद उठ के पढ़ूँ, फिर मैं फिर सोऊँ. That's not an excuse. I should wake up and then sleep. मतलब कि that's not it. तो इस वजह से इट्स माई गोल कि मैंने जो है वो फजर में भी पाबंद होना है. सेकेंड इज़ दैट कि ऑब्वियसली आई वॉन्ट टू स्टडी कुरान विद ट्रांसलेशन. मेरे पिछले साल भी गोल था, मैंने थोड़ा सा किया था, थोड़ा सा नहीं किया था. जैसे मैंने बोला कि आई नीड टू बी मतलब कि आई नीड टू एक्सेल माई सेल्फ. तो मतलब कि मैंने इस साल आई नो मोर अबाउट रिलीजन एंड आई हैव लर्नड मोर अबाउट रिलीजन पिछले साल से. लेकिन आई कैन डू बेटर, आई कैन डू मोर. आई एम गोना गो टू दोरा कुरान इस रमज़ान में. आई एम रियली 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 एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज आई नेवर बीन टू दोरा कुरान. तो उसमें भी हम कुरान ट्रांसलेशन से पढ़ेंगे, तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट. आई एम गोना प्रे तरावी. मैंने पिछले साल भी पढ़ी थी, और इट वाज सच अ गुड लाइक मतलब एक्सपीरियंस. और आई वुड डू दैट दिस टाइम टू. और इस बार तो गर्मी भी नहीं होगी. इट्स लिटरली रमज़ान इज़ कमिंग इन मार्च, तो इट वुड बी मोर इन्जॉयबल. लेकिन पहले भी इट वॉज वेरी 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 इंजॉयबल. लेकिन आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर द वेदर एज वेल. और मतलब कुरान और ट्रांसलेशन, और मुझे सूरत कहफ की पहली 10 आयत भी याद करनी है, और मुझे हर जुमे जो है वो सूरत कहफ पढ़नी है. और these are some things that I want to do in 2024, in the great year of 2024. Next is hobby. ये मेरे पिछले साल भी थी, और जिसने those who know, I said in my first podcast I want to start knitting. पूरा साल गुजर गया और मैंने कुछ भी knit नहीं किया, लेकिन for real I want to start knitting. तो इस वजह से I'll start right now, कल से. मतलब I'm not even gonna मतलब this is something I really want to do. I'm not even gonna wait for January 1st. I'm gonna do it for tomorrow मैंने शादी पे जाना है. जिस दिन मैं फारिग हुआ, I'll start doing it. I have the tools, I have everything. I'm just lazy. I'll do it. What's my excuse? Nothing. अच्छा, this is for hobby. और फिर let's talk about pleasure and the things I want to do for fun. First of all, this is something I want to do in like Ramzan से पहले, and that is to set my room. अब the furniture in my room is very old, or the bed is like 30 years old, I think. So I ordered a new bed and a new vanity and new side tables and I'm gonna get new curtain. So I'm really excited for that. Then I'm gonna get a bookshelf. So I'm really excited. I'm gonna document it as well, and I'm gonna post it on Instagram.
तो लुक फॉरवर्ड फॉर दैट. आई होप फर्नीचर टाइम से बन के आ जाए, क्योंकि मैंने ऑर्डर तो सितंबर कर दिया हुआ है, लेकिन आई होपफुली आ जाएगा. तो दिस इज समथिंग दैट आई एम गोना डू. Okay, I'm gonna set my room and I'm really excited for that. Something that I really like मैं spring में या especially summer में, I think it's a very good like activity or something new is that you can change the orientation of your room. It's always fun, always something new. So this is something you can do in your spring and summer, right? उसके बाद तो I'm really excited for, just really excited for that. For literally it would be a new change. नेक्स्ट इज दैट कि आई रियली वॉन्ट टू ट्रैवल. आई हैवंट ट्रैवल्ड. मुझे लगता है कि आई वुड बी एबल टू ट्रैवल दिस ईयर. Obviously I would love to travel somewhere abroad, or if I'm saving money or I won't do my masters or anything else, so I would love to like have a trip to somewhere outside this country. I have never been, और मुझे लगता है कि मैं बहुत दूर की सोच रही हूँ, लेकिन आई वुड लव दैट टू हैपन. इस वजह से आई एम रियली सेविंग मनी कि मे बी मतलब क्या लास्ट में पेरेंट्स से हाँ बेटा जाओ, मतलब गो बेटा. तो आई वुड लव टू लाइक ट्रैवल, बट ऑल्सो आई लाइक graciously accept and love to go anywhere local in northern. मुझे इस मौसम में नॉर्थ नहीं जाना, क्योंकि मुझे बहुत ठंड ऑलरेडी लग रही है और मुझे और ठंड में नहीं जाना. लेकिन आई वुड लव टू गो नॉर्थ in like after Ramzan, April, May, June. I think it would be so much fun. So I really would would make sure this happens, be it with my friends or my cousins or my family, मतलब जिसके साथ मर्जी, लेकिन मैं determined हूँ. Next is कि I want to stay fit. Obviously I am not doing any sort of exercise, so I do want to walk. तो इस वजह से I'll try that, लेकिन also मतलब कि just participate in physical activities. One neighbor of ours do yoga, so I'll ask her where she goes, so maybe I can like join her in that. Lekin I want to do some sort of physical activity. Let's see. I want to be active. I just don't want to lay in bed. Or this goal is not for winters. अभी मैं जनवरी पूरा महीना enjoy करूँगी, फिर फरवरी में सोचूंगी. Another is obviously read. I'm already reading, or this year have been very fulfilling in terms of reading. I have read so many good books and it was so enjoyable and loved it so much. So I just want to continue that for the next year too. And there is just so many books that I want to read, जो कि मैं साल शायद पढ़ भी नहीं पाऊंगी सारी. Like I'm just really excited and looking forward. Reading just makes me really happy. That's it for my goals. What are your goals? Please let me know. Send me a recording. Type me a message. I think कि जब आप कहीं पे बताते हो and when you just say it out aloud, so it feels much more real. So this podcast have been really helpful for me in setting my schedule or in like getting my goals achieved, or मतलब saying just things out aloud. It's just fun and it's just comforting. So please let me know your goals, because I want to hear yours. Or it's not fair that you don't get to tell me anything. So I would, if you have a podcast, so please just send me a link of it. And if you don't, so you can send me a recording anytime, or you can type me a message, or you can maybe tell me your Instagram account so I can follow you over there, and you can share it on your stories. Whatever works for you, whatever you seems is fun. Now the last thing is that you have to try all of it. You have to try the things you really want to do. अगर मेरा दिल है कि मैंने अब्रॉड जाके पढ़ाई करनी है, मास्टर्स करनी है, तो मैं बगैर मेहनत किए, बगैर हाथ पाँव हिलाए सिर्फ कि नहीं कर सकती. वरना आई रिग्रेट माई होल लाइफ कि मैंने ये किए नहीं. मुझे लगता है कि a lot of things in life, yes, a lot of things don't happen for you, and you have to be patient with that and come in peace with that. But if you are not trying for things, then you will regret. You won't regret for the things you tried your best for. मैंने किसी यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन भेजा, आई ट्राइड माई बेस्ट, मेरा एडमिशन नहीं हुआ,
आई विल नॉट रिग्रेट ऑन दैट, क्योंकि आई ट्राइड माई बेस्ट. मैंने जो करना था किया. अब आगे मेरा एडमिशन नहीं हुआ, इसमें मेरा कसूर नहीं है. लेकिन अगर मैंने किसी चीज़ के लिए कोशिश की ही नहीं है और वो चीज़ मैं नहीं अवेल कर सकी और वो चली गई अपॉर्चुनिटी, तो फिर मुझे रिग्रेट होगा. तो इस वजह से इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जो हैं वो जो भी आपका गोल है आप एटलीस्ट उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं. मैंने अगर अपनी ड्राइविंग पे मेहनत ही नहीं की और मुझे ड्राइविंग आती ही नहीं और मुझे करना ही नहीं आता, तो हाउ विल आई, तो ऑब्वियसली आई विल रिग्रेट. लेकिन अगर मैं अपनी पूरी कोशिश की और उसके बावजूद मुझे कुछ नहीं आया, मतलब कि मुझे अभी ऐसा वैसे नहीं सोचना चाहिए क्योंकि दैट्स मतलब कि, लेकिन आई एम सेइंग इट एज एन एग्जाम्पल, और उसके बावजूद वो चीज़ नहीं हुई, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. देन आई वॉन्ट रिग्रेट क्योंकि आई ट्राइड माई बेस्ट. इट जस्ट डिडंट जस्ट हैपन फॉर मी एंड दैट्स इट. आई एम गोना बी इन पीस विद दैट एंड मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ इन समथिंग एल्स. तो जब तक आप कोई चीज़ के बारे में कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपको मिल सकती है या नहीं. और अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली तो एटलीस्ट आपको रिग्रेट तो नहीं होगा क्योंकि यू ट्राइड योर बेस्ट. तो इस वजह से ट्राई योर बेस्ट. अगर इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, ट्राई योर बेस्ट. वो चीज़ हो गई, मतलब इट वुड बी अमेजिंग फॉर यू. वो चीज़ नहीं हुई, यू वॉन्ट लिव विद रिग्रेट कि मैंने उस टाइम ट्राई भी नहीं किया. क्योंकि अपना फेथ एक्सेप्ट कर लेना ना कि ओ मैंने मेहनत की लेकिन इट डिडंट हैपन, इट वाज नॉट सपोज टू हैपन, इट वाज नॉट मेंट फॉर मी, इज अ डिफरेंट थिंग. एंड देन वट एवर हैपन्स नेक्स्ट यू विल बी लाइक ओके दैट डिडंट हैपन लेकिन दिस हैपन एंड दिस इज गुड फॉर मी. लेकिन अगर आप एक चीज़ के लिए मेहनत नहीं करोगे और वो चीज़ चली जाएगी, आप पूरी ज़िंदगी सोचते रहोगे कि काश मैं उसके लिए मेहनत कर लेती, मे बी माई लाइफ वुड हैव बिन डिफरेंट. तो आपकी जो फिर जो दूसरी चीज़ भी आपकी ज़िंदगी में होगी आप उससे भी नहीं खुश रह सकोगे. यू वॉन्ट सेटल फॉर दैट एज वेल, क्योंकि आपका दिमाग वहीं स्टक होगा. तो that's it. I hope कि we have an amazing year. I hope we have an amazing 2024. I hope it's filled with all the good things in this world. I hope कि मतलब हम जो भी चाहते हैं वो हो, और अगर वो पूरा नहीं हो सकता एटलीस्ट उस चीज़ को एक स्टार्ट मिल जाए. मुझे लगता है कि कोई चीज़ स्टार्ट करना मुश्किल है, उसके बाद उसको कंटिन्यू करते रहना आसान है. Or I'm just so grateful for this podcast because this podcast have literally been the best thing that happened to me in 2023. It have been मतलब कि comforting for me. It have been enjoyable for me to think the fact कि I am like trying to help people, or I'm trying to spread positivity, and there's a lot of people who have some sort of effect from my words. It's a very comforting thought. It makes me feel that I am, even though I'm not doing anything, but there are 4 or 5 people who listen to me, or who are मतलब के who's maybe something changed because of me, or who just feel good after listening to me. I think that thought is really comforting. और अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ना कर सकी, तो भी अगर मैं बिजनेस ना कर सकी, मतलब आई होप आई डू, लेकिन इफ़ दीज थिंग्स डोंट हैपन फॉर मी, इफ मास्टर्स डोंट हैपन फॉर मी, इफ़ ट्रैवलिंग डोंट हैपन फॉर मी, अगर मुझे ये चीज़ें नहीं भी मैं कर सकी, तो दिस पॉडकास्ट इज़ इनफ टू फुलफिल मी कि I am here making a little difference, or I am here doing something I once wished for and dreamed for, and now I'm doing it, and I can keep being better in it. मतलब yeah. So this podcast has really been like one of the best things for me 2023. It made my year better. It made me more excited for life. शायद अगर मेरी ये पॉडकास्ट ना होती तो मैं इतना एक्साइटेड सीजन्स फॉल स्प्रिंग के लिए ना होती, इतना एक्साइटेड ना होती. लेकिन विद दिस पॉडकास्ट आई पर्सनली लर्न सो मच, एंड मतलब कि इट जस्ट मेक्स मी सो हैप्पी व्हेनेवर समवन टेल्स मी कि इट हेल्प देम टू. और या मतलब कि एंड आई जस्ट प्लान टू कंटिन्यू डूइंग दैट. कुछ हो ना हो, दिस पॉडकास्ट इज़ हियर टू स्टे, and it's gonna always stay. Topic change होते रहेंगे क्योंकि obviously our life is gonna be different, लेकिन it's always gonna be something that could provide you comfort and happiness and positivity, and I would always be that person for you as well. बहुत emotional हो गया. लेकिन next week's episode is gonna be really exciting because it's our first anniversary and also our 50th episode. So I really want to do something special. Like, and I don't know what special to do. So please DM me
or maybe I'll do a question and answer. I don't know if anyone's interested to ask me any question. Maybe I'll talk about podcast ki technicalities, and if you want to start a podcast, so how you can, what to do, and all of that. Or I can, like, if you want to send a message, so I can read that. It will make me feel really good. So yeah, all these things could happen. So please let me know. Let me know your goals. Let me know what should I do for my first anniversary. I think I should make a cake, or I think I should get a cake for myself. Like, that makes sense. That, like, it feels right. Like, and I'm really excited. Or I love you guys so much, and I wish a really good year for us. And I am not going anywhere. I am here to stay. So nothing's gonna change. The year is gonna change, but it's the same. Don't take enough stress. Don't take any stress, or we got this. Bye.